Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and the most merciful. I am your English teacher, Mr. Haroon Shahzad. जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम इंग्लिश 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बीइंग अ नेशन, बीइंग अ सिटीज़न, आप लोगों ने अपने आप से एक क्वेश्चन करना है कि आया कि आर यू अ पैट्रियट? क्या आप भी अपने वतन से मोहब्बत करते हैं? क्या आप इस मुल्क के बनाए हुए कवानीन को फॉलो करते हैं? क्या आप इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना चाहते हैं? इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इन क्वेश्चंस के ऊपर ज़रूर सोचिएगा। तो अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। पैराग्राफ नंबर 1। Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. It is considered a commendable quality. पैराग्राफ नंबर 1 के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग एंड सिनोनिम्स। द फर्स्ट वर्ड इज पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी, नेशनलिज्म, मदरलैंड, मादरे वतन, कंट्री, डिवोशन, जाननिसारी, लगन, अटैचमेंट, विलिंग, ख्वाहिशमंद, eager. The next word is sacrifice, कुर्बानी, lay down, arises, उभरती है, उठती है, happen, spirit, रूह, जज्बा, soul, instances, मिसालें, एग्जाम्पल्स, वॉर्स, जंगें, लड़ाइयाँ, बैटल्स, अटैम्प्ट, कोशिश करना, स्ट्राइव। पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड। हुब्बुल वतनी का मतलब मादरे वतन से मोहब्बत, और डिवोशंस टू वंस कंट्री, या अपने मुल्क से वफादारी है। Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. हुब्बुल वतनी का मतलब मादरे वतन से मोहब्बत या अपने मुल्क से वफादारी है। A patriot loves his country. एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से प्यार करता है। And is willing to sacrifice, और कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। When the need arises, जब ज़रूरत पड़ती है। A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से प्यार करता है और ज़रूरत पड़ने पर हर कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। The word patriot comes from lafz patriot आया है the Latin word patriota, लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ पैट्रियोटा से, which means countryman, जिसका मतलब है किसी मुल्क का बाशिंदा। The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. लफ्ज़ patriot लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ पैट्रियोटा से अख़ज़ किया गया है, जिसका मतलब है किसी मुल्क का बाशिंदा। It is considered, ये समझी जाती है, a commendable quality, काबिल तारीफ़ ख़ासियत। It is considered a commendable quality, ये ख़ासियत काबिल तारीफ़ समझी जाती है। तो यहाँ पर इस चैप्टर की ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। अब हम इसका बॉक्स क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बॉक्स क्वेश्चन इज हु ऑफर्स सैक्रिफाइस, वतन के लिए कुर्बानी कौन पेश करता है? The answer is a patriot offers sacrifice for the country. एक मुहिब्बे वतन मुल्क के लिए कुर्बानी पेश करता है। So after reading
The box question. Now we are going to start the simple English of paragraph number 1. Patriotism means love for the motherland. अब हम इतने पार्ट को ट्रांसलेट करते हैं, इतने पार्ट को सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं. Patriotism means love for the country or devotion to one's country. A patriot loves to serve his country. तो हमने एक सेंटेंस को दो छोटे छोटे सेंटेंस में डिवाइड कर दिया. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. He gets ready to sacrifice all the time for his country. The next line is, the word patriot comes from the Latin word patriota. The word patriot is taken from Latin word patriota, which means countryman. This word means a citizen. The last line is, it is considered a commendable quality. It is considered, it is से क्या मुराद है? Patriotism. Patriotism is respectable quality. तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 का पैराग्राफ नंबर 1 कंप्लीट होता है.